Adani Group is redeveloping Dharavi. These 5 words are driving the elections in Maharashtra. हा लढा आता केवळ धारावीचा राहिलेला नाही, हा लढा संपूर्ण मुंबईचा आणि महाराष्ट्राचा झालेला आहे. ये सर्वे कौन कर रहा है? इस पे हम भरोसा कैसे करें? Asia's largest slum cluster is being developed by one of India's biggest business tycoons. तो प्रॉब्लम क्या है? आप चाहे ताजमहल बनाओ चाहे झुपड़ा बनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक का खुश रहना ज़रूरी है. In the first part of this 2-part report, we showed you how Dharavikars are divided on the matter of redevelopment due to 2 key issues: survey and eligibility. Under the redevelopment project, everybody in Dharavi will be rehabilitated, but there is a catch. All those with residential proofs before 1st January 2000 will be rehabilitated in Dharavi. Those who are ineligible under this criteria will be rehabilitated elsewhere in the city. So, why the cutoff date? What are the options for ineligible residents? Watch the first part of the report for that on the Quince YouTube. But here's the third big concern. के बाद ये बिल्डिंग बनेगा, अगर ये कारखाने उठेंगे तो ये लोग आगे क्या आइडिया इनका कि कुछ बता रहे नहीं, तो हम लोग का क्या होएगा ये समझ में नहीं आ रहा है. Businesses of Dharavi, a hub of lakhs and lakhs of micro businesses that provide employment to millions living within Dharavi and outside it. From food, bags to shoes to school uniforms, leather, everything imaginable under the sun is manufactured in Dharavi. Just to help you understand the scale of what kind of businesses run inside, there is an entire lane in which idlis and vadas start getting cooked at 3 a.m., following which small vendors come to buy them and sell them across the city on bicycles in the morning. So, where do businesses like these, which generate employment and feed families largely in the unorganized sectors, find a place in the grand redevelopment project? मैं ये एक कारखाना चलाने वाला छोटा आदमी, मेरे पास एक 5-6 आदमी काम कर रहा है. जो काम मेरे पास कर रहा है वो फैमिली वाला है, उसके घर पे बाल बच्चे हैं 2-4. ऐसा अगर पकड़ेगा तो मैं ये अकेला आदमी कम से कम 20-25 आदमी को रोजी रोटी दे रहा है. आगे क्या आइडिया इनका कि बाबा तुमको इधर कारखाने पे जगह देगा, इधर रहने के लिए देगा, ये कुछ बता रहे नहीं, तो हम लोग का क्या होएगा ये समझ में नहीं आ रहा है. नीचे रहते ऊपर काम चलता है. हम लोग का सबका ऐसा ही है कि नीचे रहने का ऊपर काम करना है. हम लोग का इतनी ताकत नहीं कि रहने का अलग कारखाना अलग, इतना भाड़ा हम लोग दे नहीं सकते. अभी भाड़ा कम से कम किधर भी छोटा से छोटा रूम लेने जाओगे ना सर, तो भी हमको है ना 15-16 हज़ार के नीचे भाड़ा नहीं है. Now, units like these, structures like these have been legally registered through the years with the authorities. They have their electricity bills, they have their address proofs, everything in place. So what they're asking for really is space against space to run their businesses inside Dharavi as they were. That is what they are seeking clarity on from the authorities and the DRP, while saying that they are not opposed to the project in any way. कि हमारा अगर 3 फ्लोर है तो हमको 3 फ्लोर चाहिए, हमारा 2 माला है तो हमको 2 माला चाहिए. जितनी जगह है उतनी जगह दे, हमको ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन धारावी में ही चाहिए. Like residential clusters, several business units in Dharavi too have opposed the survey being conducted by the DRP. जब तक सर्वे नहीं होगा पता नहीं चलेगा क्या है और क्या मिलने वाला है. इसके लिए उन्होंने क्लियर किया है कि आप हमें सर्वे करने दो, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि इंडस्ट्रियल जोन कहाँ बनाना है, कैसा बनाना है. जब बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग बनाने के बाद एक डॉक्टर की दुकान होगी, बाजू में चमड़ा छीलने वाले की, चमड़ा धोने वाले की दुकान नहीं हो सकती है. Now, the common demand for each and every section of society in Dharavi is that they want to be rehabilitated in Dharavi itself. What is the rehabilitation plan and why is the opposition claiming land grab? There are certain places that have been identified across the city to rehabilitate the ineligible slum dwellers of Dharavi. These include 21 acres of mother dairy land in Kurla, 200 acres in Deonar, 256 acres of salt pan land in Bhandup Kanjurmarg and 64 acres in Mulund owned by the BMC. The Quint has reached out to the DRP to seek out more clarity on how these land parcels will be utilized, but here's what's known so far. These land parcels will remain with the state government with the Adani Group as the developers. Out of the 600 acres land in Dharavi, only 300 acres would be available for the redevelopment project, with the rest already being used up for Dharavi Kolivada, the Mahim Nature Park, a power substation and an upcoming BMC sewage water treatment plant. The land in Dharavi as well as other land pockets being acquired will not just be used for creating residences and business units, but are expected to be small townships that includes roads, open spaces, hospitals and schools among other things. In September, Pallavi Paranzape, the Deputy Director of the Redevelopment Project, said that a master plan will be drawn soon.
However, the local politics of Dharavi as well as Mumbai has peaked over the matter. The Dharavi Bachao Andolan, a group led by several local stakeholders as well as parties like Shetkari Kamgar Paksh, has been at the forefront of demanding that all residents must be rehabilitated in Dharavi itself. Mumbai Congress chief, former Dharavi MLA and now Lok Sabha MP Varsha Gaikwad has also backed these demands. धारावी के जो लोग हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये 2000 का कट ऑफ डेट ना होते हुए वो बढ़ा के अगर देंगे तो फिर यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको धारावी में ही घर दे सकते हैं, जो कि पॉसिबल चीज़ है। वो उन्होंने अगर करेंगे तो सबका इन सिटू रिहेबिलिटेशन होके लोगों का जो अपना हक का घर है वो धारावी में ही मिलेगा। And you should first release master plan. Now they are putting numbers. This particular structure, he doesn't know or he is not aware. In lieu of this, where he is getting his structures like house or shops or whatever it is. So we have a right to know that. But do you think they will be able to give the master plan depending on the survey later? See, if you want to only conduct a survey, you will just put the numbers. You will not ask the paper. They are also asking the papers. That means you will start the eligible and ineligible procedure. Meanwhile, the ripples of it are also strong in the state level politics. 1 लाख लोगों को घरों को पुनर्वसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केवल आपने रेलवे की लैंड दी इसलिए ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। जो विकास आम्हाला पाहिजे तो इकडचे इकडे झालेला पाहिजे, जो विकास आम्हाला पाहिजे आमची घरं धारावीतली घरं आम्हाला धारावीतच पाहिजेत आणि पुनर्विकास देखील होताना आमच्या डोळ्या देखत तो पुनर्विकास झाला पाहिजे, इथून कुठेही दुसरीकडे आम्हाला नेता कामा नाही, ही शपथ आज आपण इथे घ्यायला आलेलो आहोत. But beyond all the politicking, divide and uncertainty remain the two key sentiments when it comes to the voters of Dharavi. आप बोलो तुम लोग भाई तुम लोग को ये लाइन में तुम्हारा ये बिल्डिंग देता है, उधर तुमको ये गाला देगा, ये गाला तुम्हारा रहने का होएगा फ्लैट और एक तुम्हारा कारखाना होएगा। हम हंसते हंसते पैर धो के पानी पियेंगे लोग के, हम लोग मजाक नहीं कर रहा हूँ। चाहे सरकार किसी की भी हो लेकिन डेवलपमेंट ज़रूर होना चाहिए। रहा सवाल जो कारखाने हैं या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि क्लियर होना चाहिए।